total effect of a force which acts for a short time. Mathematically, it is defined as product of the force and the time for which it acts, and is equal to the total change in its momentum. So this is the definition of the impulse. कोई भी फोर्स किसी थोड़े से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी चीज पर एक्ट करता है तो उसे हम इम्पल्स कहते हैं. Now what is the formula for the impulse? So formula for the impulse is equal to force into time. That means we can write it as impulse is equal to force into time, which is also equal to change in momentum. That means F delta T, which is equal to, now what is the formula of force? Mass into acceleration into delta T. Or we can also write as m v minus u upon delta T into delta T. So now delta T and delta T get cancelled. So it becomes m v minus u, which is equal to what? Change in momentum. That's why impulse is also known as change in momentum. Now, what is the dimension of the momentum and its SI unit? So we can also write in the same way, that is impulse can also be written as J is equal to integration of from time 1 to time 2 f dt. F is a vector quantity. So f is a constant quantity, we can take it outside with the help of integration. We can find its value. So which is equal to f, it is integration of t from t1 to t2, which is equal to f t2 minus t1, which is equal to f delta t. So this is another derivation of the impulse. Now SI unit of impulse. So SI unit of impulse is kilogram meter per second. Dimension of the impulse. So its dimension is m l t minus 1. Now for example, there's one more question which can be asked in the examination. What is impulse momentum theorem? So according to impulse momentum theorem, the impulse of a force
is equal to the total change in momentum produced by the force. So this is the statement of the impulse momentum theorem. That means, according to Newton's law, force is equal to change in momentum with respect to time. So f of dt can be written as dp. So integrating these two with the limits from 0 to t, f dt, which is equal to, firstly its momentum is p1, then p2 to d. So it becomes integration of p from p1 to p2, which is equal to p2 minus p1, and integration of f dt, that is known as impulse, because impulse is when a force acts for a very small interval of time. Force into time, that is impulse. Now, measurement of momentum using graphical method. Measurement of impulse using graphical method. For example, there is a graph given to us in which on the y-axis we have force and on the x-axis we have time. And for example, this is a type of rectangle, and it is said that find impulse from this graph. Then let it be A, B, C and D. So area of ABCD is equal to impulse. A figure may be anything. It is rectangle, it is triangle, it is quadrilateral, trapezium, etc. That means when force is on y-axis and time is on x-axis, then area gives impulse. Now the different numericals on the impulse. Question number 1. A cricket ball of mass 150 gram is moving with a velocity of 12 meter per second and is hit by a bat. So that velocity of ball becomes 20 meter per second.
The force acts for 0.01 seconds on the ball. Find average force exerted by the bat on ball. एक क्रिकेट बॉल है, उसका कुछ मास है, वो किसी वेलोसिटी से चल रही है, उसको अचानक एक बैट से मारा गया, तो उसकी वेलोसिटी बदल गई। तो हमें एवरेज फोर्स निकालना है जो उस बैट ने उस बॉल पर लगाया। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो थोड़े टाइम के लिए वो फोर्स लगाया गया था, तो यहाँ पर ये इम्पल्स है। सो मास ऑफ बॉल इज इक्वल टू 150 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदल लो, तो 150 अपॉन 1000 किलोग्राम। इसके बाद बेटा आपको दिया हुआ है जिस वेलोसिटी से बॉल चल रही है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, 12 मीटर पर सेकेंड। अब उस पर जो थोड़े टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया गया, टाइम आपको दिया हुआ है 0.01 सेकेंड्स। फाइनल वेलोसिटी बॉल की क्या हो रही है जब उस पर बैट हिट किया गया? फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल 20 मीटर पर सेकेंड। तो थोड़े टाइम के लिए फोर्स किया गया, तो दैट मीन्स इम्पल्स। So formula for the impulse is known as, also find the change in momentum, which is equal to m v minus q. The mass of the ball is 150 gram upon 1000. Velocity अपोजिट डायरेक्शन में गया बॉल का, तो -20 जाएगा, और ये इनिशियल वेलोसिटी 12। ये बात ध्यान रखने का है यहाँ पर, जब भी इस तरीके से बॉल हिट किया जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 15 अपॉन 100 इंटू -32। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों जीरो का ये पॉइंट आ गया, तो 32 को आपने 15 से मल्टीप्लाई किया। 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 3 48। So it becomes 480 अपॉन 100। ये आ जाएगा 4.8। ठीक है। अब एवरेज फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स। ये भी मेरे पास एक फॉर्मूला था, तो यहाँ से फोर्स हमें निकालना है, टाइम जो उस पर एक्ट किया गया है 0.01 सेकेंड का, ये देखिए, और इम्पल्स आपका आया 4.8। रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू 4.8 अपॉन 0.01, ये पॉइंट हट गया, डबल जीरो, दैट इज 480 न्यूटन। इस तरह से इम्पल्स के न्यूमेरिकल्स होंगे, जिसमें चेंज इन मोमेंटम भी अप्लाई होगा। थोड़ा सा रिलेट करके ये क्वेश्चंस रहेंगे, डायरेक्टली आपको हो सकता है ना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। A ball moving with a momentum
of 5 kilogram meter per second strikes against a wall at an angle of 45 degree and reflected at same angle. Calculate change in momentum. यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें एंगल भी दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक दीवार है, इस पर एक बॉल आती है, एक्ट करती है, ठीक है, 45 डिग्री पर, और फिर वो रिबाउंड हो जाती है वापस 45 डिग्री पर, ठीक है। तो हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम 2 डायरेक्शन में निकलेगा, एक आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, एक आपका हॉरिजेंटल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हम लोग साइन 45 लेते हैं और हॉरिजेंटल पे हम लोग कॉस 45 लेते हैं। ये किस तरीके से किया जाएगा, पहले हम इसमें निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम along वर्टिकल डायरेक्शन, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यानी मान लीजिए वो मोमेंटम की वैल्यू ये दी हुई है, तो ये आपका हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और यहाँ पर ये टी साइन 45 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये आपका इस डायरेक्शन में है और ये भी आपका इस डायरेक्शन में, that is equal to 0. Now change in momentum in horizontal direction, यानी वर्टिकल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो दीवार है। तो ये फाइनल मोमेंटम में आ जाएगा माइनस पी कॉस 45 डिग्री, इनिशियल मोमेंटम माइनस पी कॉस 45 डिग्री, ये दोनों प्लस हो जाएगा माइनस 2 पी कॉस 45 डिग्री। मोमेंटम की वैल्यू ऊपर आपको 5 दी हुई है, तो 2 इंटू 5 कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, ये हो जाएगा -10/√2। इसको आप अगर और सॉल्व करना चाहें तो -10/√2 इंटू √2 इंटू √2। √2 की वैल्यू हमें पता है 1.414 होती है, दैट इज 10 इंटू 1.414 अपॉन 2, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20, 5 6 7, 5 4 जा 20, 5 जा 5 6 7, तो 7.07 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। तो एंगल के साथ अगर आपको क्वेश्चन कभी दिया रहेगा तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे इम्पल्स का। अब एक क्वेश्चन मैं आपका लेने जा रही हूँ ग्राफ के ऊपर इम्पल्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। बाकी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के, तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा। मान लीजिए आपको एक ग्राफ दिया हुआ है ऐसे करके, यहाँ पर आपका ये 0 है,
6,000, फिर ये 12,000, फिर ये 18,000। ये आपका फोर्स दिया हुआ है सारा वाई एक्सिस पे। यहाँ पर आपका स्ट्रेट जा रहा है, ये 1 है, फिर ये 1.5 है, फिर ये 2 है, 2.5 है। 1 से जब ये गया तो ये 18,000 तक गया और ये 2.5 पर आके स्टॉप कर गया। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, ये सी है। 1.5 से अगर जाएगा तो ये 12,000 तक गया और ये 2 तक गया। ऐसे यहाँ से हमें ये कर्व दिया हुआ है, ये आपका टाइम है। हमें इस कर्व को देख के बताना है फाइंड इम्पल्स। फिर हमें बताना है फाइंड फोर्स exerted on wall। मैक्सिमम फोर्स ऑन वॉल। और ये फिगर बना। हमने आपको बताया था कि जब भी अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया होगा तो हम इम्पल्स में जो ग्राफ का एरिया होगा वही आपका इम्पल्स होगा। तो फर्स्ट आपका सॉल्यूशन जो है, अगर आपको इम्पल्स निकालना है तो इम्पल्स इज द एरिया ऑफ द ग्राफ, दैट इज एरिया ऑफ ए बी सी। तो ये ट्राइंगल बना हुआ है तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस की जगह आपका कितना आएगा, बेस आपका ये है 1 से लेके 2.5 तक, यानी टोटल बेस हो गया 2.5 माइनस 1 यानी 1.5। और हाइट आपकी ये यहाँ टिप पर आ रहे हैं तो 18,000 है, ये आपका कैंसिल हो गया 9,000। सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 9 जा 135 और ये 2 0। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद हमें निकालना है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल। तो फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स, ये मेरा फॉर्मूला होता है, यानी फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स अपॉन टाइम। इम्पल्स हमारा क्या आ गया 13500। टाइम हमारा क्या होगा, यही जो टोटल टाइम है, तो नेट टाइम मेरा कितना आ गया 1.5। हमने 1.5 से इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 9,000। आपका फोर्स कितना आ गया 9,000 न्यूटन। अब आपको मैक्सिमम फोर्स निकालना है, थर्ड क्वेश्चन। तो मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए किसी ग्राफ में जो हाईएस्ट फोर्स का पॉइंट होगा, ये आपका कितना दिया हुआ है 18,000, ये पीक पर, यही आपका मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू हो गई 18,000 न्यूटन। So there are different types of numericals based on the impulse.